Hello, dear friends. 11th question of Elixir series. This is question number 11. The statement is like that. If the radius of a sphere is increased by 2 centimeter, its surface area increased by 352 centimeter square. The radius of sphere before change is A 3 centimeter, B 4 centimeter, C 5 centimeter, or D 6 centimeter. If we need it, pi is 22 by 7. So, the solution of the question is like that. Here we are discussing about two spheres. One sphere with radius r and the other sphere with increased radius r plus 2. So let's see, there is one sphere, this is radius r, and the other sphere little bit big because its radius is r plus 2. Surface area, for the surface area, of sphere is 4 pi r square. So we can say surface area or the curved surface area of sphere formula is 4 pi r square. Okay. So the question said if we have this with r radius sphere and if we increase this radius by 2 r plus 2, then the surface area of the previous sphere or the previous condition increased by 352 centimeter square. So surface area of sphere with increased radius equal to surface area of sphere with r as radius plus 352. So we can say the formula is 4 pi r square, but because the radius increased, so it becomes r plus 2 whole square, and the previous one is 4 pi r square plus 352. Means if we increased the radius r plus 2 from r, then it is 352 more than the previous one. So now we can use here identity r plus 2 whole square. So we write it 4 pi r square 4r plus 4 equal to 4 pi r square plus 352. So now we multiply it with this 4 pi r square, 4 pi 4r plus 4r. Here we are multiplying with this but not multiplying with this, putting as it is with these two terms because we use it later on. 4 pi r square plus 352. So this is the equal term. When we take any of them from either side, from here to here or there to there, so it will cancel out. So we can cancel out this 4 pi r square term. Now it is 4 pi 4r plus 4 equal to 352. So we can again take it out this 4. So this becomes 16 pi r plus 1 equal to 352, and this here we said that we can use pi is 22 by 7. So 16 into 22 by 7 r plus 1 equal to 352. So this r plus 1 equal to 352 into 7 upon 16 into this. This 16 into 22 is equal to 352.
So now this r plus 1 is 7. So r is 7 minus 1, which is 6 centimeter. So r is 6 centimeter, the radius of sphere before the change. The radius of sphere before the change was r. So it is radius of sphere before the change is 6 centimeter. 6 centimeter. So our answer is D. Our answer is this, D. एक बार दोबारा से इसको, अगर हम किसी गोले के त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो उस गोले के क्षेत्रफल पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर में 352 बढ़ जाता है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो जो उस गोले की त्रिज्या पहले थी वो बताइए, r+2 होने से पहले थी। तो हमने 2 गोले ले लिए, 2 स्फीयर ले लिए विद r विदाउट चेंज एंड विद r+2 रेडियस चेंज। जब यहाँ से यहाँ का चेंज आया तो इसमें इसके सरफेस एरिया में 352 बढ़ाने पर इसके सरफेस एरिया के बराबर हुआ। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद इंक्रीज्ड रेडियस r+2 एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r+352। तो इंक्रीज्ड रेडियस r+2 के साथ द फॉर्मूला इज 4πr²। तो 4πr+2 बिकॉज रेडियस यहाँ पर क्या है r+2 होल स्क्वायर इक्वल टू जो पहले था 4πr² के साथ प्लस उसमें 352 बढ़ गया। तो यहाँ पर r+2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है r² + 4r+4। ये एज इट इज़ रहा, 4π बाहर है। फिर मैंने देखा कि आई कैन सी there is one common term can come which can cancel out this 4πr². So I multiply with only this r², 4πr², and kept common with this inside 4r+4 and then cancel out this same term, because अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा या इसको इधर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब हमने इनको यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिया तो ये 16π = r+1 = 352 हो गया। पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो 16 × 22/7 r+1 = 352। This goes down, this goes up. 352 cancel out with 16 × 22. So r+1 = 7 and r = 7 - 1. r is radius of sphere without change, previous जो पहले था बिना बदले हुए। तो radius of sphere before the change is 6 centimeter, which is according to this question answer is D, 6 centimeter. सो आप सभी को अगर मेरा ये एलिक्सर 20 चैनल पसंद आ रहा है, इसके क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन दबाइए जो कि आपको आने वाले क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और देखते रहिए, फैलाते रहिए दोस्तों में। धन्यवाद आपका।